That is when he thinks that there is one, that कि हाँ इधर कुछ ना कुछ दिक्कत है. But you know, maybe मैं भी अपने आप से वही कर रहा हूँ, मतलब अपने आप पे आई एम प्रोजेक्टिंग द सेम थिंग कि यो देयर इज अ प्रॉब्लम. दिक्कत है जो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं पूरे दिन. Like every action of mine, it's like हमेशा इस चीज से रिलेटेड है, like work, bro. If I'm playing a game, it's avoidance from work, you know. If I'm listening to some audiobook, it is to better my work, some self-help bullshit. If I'm walking, it's like maybe that's a different aspect generally, but that I guess can be categorized into fitness, bhai. So again, different thing, but fitness in general, it also increases productivity, but that's not what my purpose with fitness is. I don't think so. But like other than fitness, my main agenda with everything, it's fucking work. Even though it isn't on the surface, it doesn't look like on the surface, but yeah, it always boils down to it. Always. At least currently in my life right now. हाय अगर मैं बैठा हूँ कुछ करने, जर्नलिंग करने बैठा हूँ या लिखने बैठा हूँ कुछ भी, इट्स लाइक हमेशा वही निकलता है ब्रो. अगर मैं गेम खेलने बैठा हूँ, अगर कोई भी डिस्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, इट्स लाइक distraction from what? Distraction from I guess distraction from this. क्योंकि I know it has to be done. I know that is the sad part. I just know and I enjoy it as well. Like I enjoy work. I I like working, man. I like it. I like studying, but it just doesn't manifest into action. It really does. I don't know why. Like जब पसंद है तो why don't you fucking do it, bro? Like doesn't make sense. But पसंद है भाई. If you like it, if you feel good when you do it, like why just not do it? What stops you? What fucking stops you, man? It's like it's just stupid to not do something you'd like. It's stupid. Then why? Think to yourself, why do I um avoid it so much? Why do I? Okay, भाई obviously conditioning, भयानक level की conditioning हो रखी है इधर. It's like over 3 years. You know, पता नहीं क्या क्या हुआ है through my fucking brain, to my thought patterns, my general patterns. You know, पता नहीं क्या क्या हुआ है. तो it's like again that. But can you overcome it? I don't know. Maybe not. Maybe yes. Probably yes. But भाई main point है कि what if this is the pura is a fucking echo chamber, कि भाई मैं पूरे अपने जिंदगी को I base I base oh my god, I base in this fucking जो भी है this circle, इसमें सारी चीजें मैं इसके अंदर ही कर रहा हूँ, but it's like echo chambers are not healthy यार, कि मैं हर चीज इसके अराउंड ही हो रहा है ब्रो.
एंड इट्स लाइक तुम सोचोगे कि भाई लाइफ इज अ लॉट बिगर देन दैट, लाइक लाइफ इज अ लॉट बिगर देन दिस। ये सोचेगा समवन दैट लुक्स एट माई सेल्फ, जो मुझे देख रहा है दूर से, और वो देखेगा इस वीडियो को, सोचेगा भाई व्हाट द फक इज गोइंग ऑन, क्या कर रहा है बंदा, कहाँ पे फंसा हुआ है बंदा, राइट? कोई भी एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव के साथ देखेगा इस चीज को, ये सोचेगा ना ब्रो, लाइक कहाँ कहाँ घूमे जा रहे हो, व्हाट द फक इज ही सेइंग, क्या बोलना चाह रहे हैं ब्रो, कहना क्या चाह रहे हो, क्या दिक्कत है तुमको ब्रो, ये सोचेगा ना। तो लाइक, क्योंकि मेरा दिमाग एक जगह है, राइट, और उसका, और जो ऑब्जर्वर है उसका दिमाग एक जगह है, उसका दिमाग आई डोंट नो कहाँ है, लेकिन उसके लिए दिस विल लुक फकिंग एलियन, यू नो। और तुम फिर रियलाइज करोगे कि तुम इस सर्कल के no, इस सर्कल के अलावा यू कुड बी फकिंग एनीवेयर, कहीं भी हो सकता था ब्रो, कहीं भी। मैं सर्कल के बाहर किसी भी पूरा, आई कैन बी as fucking free as I want to be. Maybe that's not how the brain works, but I want to think it does. क्या बोले जो हम ब्रो, this fucking thing has no point. I'm recording, it has no point. क्या पॉइंट है इसका ब्रो, व्हाट, क्या पॉइंट है इसका, नो पॉइंट टू इट, I've said enough. It's like इतना कॉम्प्लिकेटेड, एनीथिंग इट शुड, एनीथिंग, कोई भी कुछ काम करे ब्रो, इट कैन नॉट, इट शुडंट बी दिस कॉम्प्लिकेटेड, इट्स नॉट हेल्दी फॉर इट टू बी दिस कॉम्प्लिकेटेड। इतना है तो गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है भयानक वाली, कुछ नहीं कर पाएगा ब्रो, कोई मतलब कुछ भी कर पाएगा इन द सेंस कि एक्शन के टाइम, एक्शन के एस्पेक्ट में, कि मतलब भाई एक्शन जो निकल रहा है उसका आउटपुट, फक इट, ठीक है, एक्शन एटलीस्ट तो भाई दैट इज लाइक, यू कैन नॉट स्किप इट, वरना देयर इज नो लाइफ, ठीक है, व्हाटएवर अचीवमेंट, it's not an action, it's just maybe an event, um maybe some sort of data, maybe some sort of, क्या है ये, शायद डेटा है, लाइफ इवेंट है, it's not something you do, it's something that comes out of what you do, and what you do, और उसमें नहीं है कुछ, what happens with it, what happens with the achievement, जो भी है result, जो भी है, it doesn't have to do anything with your मतलब, it doesn't have to anything to do with yourself, you know, you did what you had to do, और जो से निकला, ओके, ओके, there is no action involved in getting that into your brain, information को अपने दिमाग में भरना, there is no action in it, कोई action नहीं हो रहा उसमें, just get it, दिमाग में भर गई वो चीज, but doing a thing, that is what really is the actual part that makes you feel alive, and that is what I realized is like, that is what I experientially have experienced, obviously, experientially experienced, but like, again, nothing should be this complicated, क्यों है भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड ये चीज, क्यों बोलना पड़ रहा है इतना मुझे, बोल क्यों रहा हूँ मैं इतना, लाइक क्यों है कॉम्प्लिकेटेड इतना भाई ये, why has it gotten this complicated, it shouldn't be this complicated भाई, it's like you're just doing something, और इतना कॉम्प्लिकेटेड कहाँ से हो जा रहा है ब्रो, लाइक नहीं, नहीं, that is stupid, stupid like completely stupid, nothing should be this, कितनी बार बोलूं, and why is it so complicated भाई, I don't know क्यों, क्या है मेरे दिमाग में भाई, क्या दिक्कत दिमाग में मेरे,
Again, दिक्कत, there is some sort of दिक्कत. Like, there shouldn't be this much thought. ये panic level का thinking about something that actually outcomes boils down to absolutely nothing. If anything, bullshit. We निकलेगा इससे with what I'm saying right now. It will be absolute bullshit. कुछ point नहीं होगा उसका. But I'm still doing it. I don't know why. But like सोच तो देखो first thing we can do is like get out of this fucking shit. निकल ही जाओ. You realize कि this is a circle jerk. You realize कि इधर हर एक thought doesn't contribute to anything. उधर हर सारी philosophies में आ जाओगे. अब मैं नहीं जा रहा किसी में. It's like it's like there is a first case scenario is कि if we are in an echo chamber कि भाई एक echo chamber में फंसे हुए हम लोग एक ही चीज के अराउंड अपनी लाइफ को फिक्सेट करके बैठे हैं. एक ही चीज के अराउंड भाई. एक ही चीज के अराउंड. आई डोंट नो करना चाहिए या नहीं. आई डोंट नो. कैन आई वांट टू नो एनीथिंग. आई डोंट नो एनीथिंग. ये होना चाहिए. फर्स्ट चीज की एको चेंबर से निकलो. यू नो जो भी तुम सोचते हो पूरे दिन उससे ट्राई गेटिंग आउट ऑफ इट. ट्राई थिंकिंग न्यू थिंग्स. ट्राई ट्राइंग आउट न्यू थिंग्स. एक ही जगह अपने को मारते रहना भाई. इट्स लाइक नो. सेकंड आउटकम इज कि मे बी तकप रहो इसी चीज में. मैं इसे नेगेटिवली वर्ड नहीं करूंगा लेकिन कीप एट इट. कीप hammering कीप हैमरिंग दिस थॉट. कीप हैमरिंग ये चीज इन जनरल कि you know try fixating on again productivity, maybe self-help, maybe whatever, maybe philosophies, maybe theories, maybe जो भी spectrums, anything. उस पे डटे रहो, right? कि maybe it will get an end result, maybe. I don't know. Okay. यहाँ से हम किसी करते रहेंगे hammer कि you know there is some kind of belief that exists out there कि कोई तो कुछ तो belief है. I will fix all of this. कि मैं ये belief होगा. ये अगर मैं ये philosophy enact कर लूँ तब I'll do the work seamlessly. Bro, I don't think my brain works like that, honestly speaking. I don't think so. ये belief निकाल लो. ये belief को जब मैं घुसाऊंगा अपने दिमाग के अंदर, जब मैं इस चीज को इसे सोचूंगा तब जाके सही होगा. No, I don't think. uh, I don't think so. क्या है? क्या है फिर भाई? क्या है फिर? टेल मी. अभी के अभी बताओ. क्या है इफ नॉट um like belief, if not thought. क्योंकि क्या है हर चीज when whatever I'm saying है it's like thought. की philosophy क्या है? It's thought. It's your मेरा थॉट क्या है इन रिगार्ड्स टू दिस. मेरा थॉट क्या है कि इस चीज को लेके पढ़ाई को लेके क्या थॉट है मेरा. दैट इज व्हाट फिलोसफी इज. नॉट इवन व्हाट इज फिलोसफी और डेफिनेशन ही क्या है. फिलोसफी इज इट कैन बी व्हाट यू ought to do. Knowing what you ought to do. It can be what you ought to think. It can be um it can be reasoning जो भी है. But it can be like in the end what is it? Thought है. And literally as much as I don't want to hear it, maybe maybe the problem is that you're just too engulfed in thought. Maybe you just need to enact the we need to enact more thoughtlessness. जो enact कर चुका हूँ मैं by the way. Enact कर चुका हूँ मैं. What that is called is retard maxing.
You put as little thought as possible into your actions. Hmm. I've done that as well, bro. That is such bullshit. तो इतना नहीं करा कि मैं क्रेडिबली बोल सकूं बट ठीक है थर्ड है भाई इट इज थॉटलेसनेस टू बी बकवास भाई ये सारे जाओ भाई ओ लॉर्ड yeah third one is thoughtlessness basically without maxing or something like anti-philosophy है ना फोर्थ कैन बी फिलोसफी ये फिलोसफी इसमें आ गया ना हैमरिंग वाले विच इज सेकंड इसमें फिलोसफी इट कैन बी सेल्फ हेल्प कैन बी beliefs it can be thoughts what do you think about the thing what do you think third is what you not think first is think but एक सर्कल के अंदर जबकि देयर एग्जिस्ट्स से इट्स लाइक अ यूनिवर्स यू थिंक कि भाई विजिबल यूनिवर्स जो है वो ही है सब कुछ बट यू लुक आउटसाइड देयर आर लाइक thousands of universes out there so it's like and you think कि इधर ही visible ही is everything but no you realize later on कि maybe your visible universe wasn't everything there is that is what it is तीसरा okay now क्यों भाई क्यों भाई भाई मर जाओ यार क्योंकि भाई मैं हर चीज ट्राई कर चुका हूँ भाई and it's like nothing has given me what I wanted क्या क्या philosophy भाई nothing has given me what I wanted कि something that actually gives me what I want something that मतलब ऐसा तो होगा भाई कि एक पॉइंट पे you find something that works for you something that seamlessly works but does anything seamlessly work anything seamlessly work अबे यार philosophies में आ जाओ it's like you want stability you want something that's very fucking easy but you won't ever get it because that's not how life is. That's not how life functions. That's not how life is supposed to be. Right? उस पे आ जाओगे अब भयानक पागल फिलोसफीज पे फिर वो ये बोलेंगे कि लाइक एवरीथिंग दैट यू जस्ट लाइक जो मैं बोल रहा हूँ अभी तक उस पे ही पूरा दिल उस पे पूरा लिख डालेंगी उसके अगेंस्ट सब कुछ कि ये सब कुछ गलत है and they'll like give you something that actually seems right give you something that seems right भी क्या it is right why why again there is no something that लेकिन लोगों के लिए होता है यार it must be something that works for me कुछ तो होगा यार something that clicks with my being या फिर inherently it doesn't exist what I'm looking for inherently it isn't supposed to exist maybe क्या बकवास है भाई उपसी तो डालो मेरे को Any, anyway तो लाइक problemo
Problemo is the thought there is a problem. ये भी है क्या? Yeah, should be. Problemo is problemo thought is the problemo. और ये कहीं ना कहीं फर्स्ट एंड फोर्थ they interconnect with each other. कैसे कि मे बी तुम्हारा एको चेम्बर जो है, राइट, वो एको चेम्बर भी बोल सकता है कि व्हेन, तो तुम्हारा चौथा प्रॉब्लम इज द थॉट देयर इज अ प्रॉब्लम हो, वो बोल सकता है कि भाई यूर एन एको चेम्बर। तो व्हेन यू लुक आउटसाइड द एको चेम्बर तुम रियलाइज करोगे तो प्रॉब्लम बोल रहे थे, इट रियली इज नॉट अ प्रॉब्लम। द सेम थिंग लाइक इन फ्यूचर रेट्रोस्पेक्शन, राइट, आगे जाके यू लुक बैक एंड तुम देखते हो कि कहाँ फंसा था मैं, दिस wasn't अ प्रॉब्लम, दिस shouldn't बी अ प्रॉब्लम। तुम ये सोचोगे व्हेन यू लुक बैक ऑन लाइक दिस। वैसे मैं देखूंगा अपने इस रिकॉर्डिंग को, आई बी लाइक ब्रो व्हाट द फक वाज गोइंग ऑन, क्या लेके बैठा था मैं, क्यों लेके बैठा था ये चीज को। रात के 2 बजे, तो कितने बज रहे हैं, 2 बजे एग्जैक्टली, वाह। तो 2 बजे बैठा था और ये सोच रहा था लाइक स्टूडेंट, तो वो बोलेगा मैं सो रहा होता तो सो जाता भाई, क्या कर रहा था ये, राइट। द फर्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट देन आर रिलेटेड। Same case like when something disastrous, when a tragedy occurs, and I'll be looking at this under the tragedy, and I'll be like, "क्या था ये? Why was I bitching, crying about this thing when this wasn't really a problem? This wasn't. Uh, when I look back, it isn't the biggest of my concerns. Like maybe in the future, just living will be my concern. Ki bhai, you know, maybe like some tragedy occurs and living, surviving, that is the issue. Be like World War III occurs, and I'll be like, और उसमें India is in ruins, and we're in a shelter, in a bunker, or and I'll be like, bhai, look at this recording, I'll be like, bro, what were you on about? क्या कर रहा था ये बकवास? Like, should have been like सो रहा होता, या you should have been doing something that you actually cared about, and this is like what the retrospection shows of most individuals that have aged in life, right? तो ask anyone about like exams, किसी से भी पूछ लो, when they have gone through it, ऐसे when someone stresses about 10th exams, and तो एक average person क्या बोलता है उसको कि it doesn't fucking matter, right? Like even if I think about myself और मैं किसी और को advise करूँ, I'll be like, bro, this is nothing, you know, this is nothing, absolutely nothing, right? So this is what retrospection shows. Like 10 years on the line, when someone looks back on this time when I was 18 years old, someone else looks at this in the present जो 30 साल का है मान लो, और वो बोलते हैं, and he sees what I'm doing right now, and he'll be like, what the fuck, क्या है ये, क्यों है ये, you know, क्यों कर रहा है ये बकवास, ऐसी क्या दिक्कत है इसकी जिंदगी में, you know, क्या दिक्कत है, and like the दिक्कत, then he would say कि दिक्कत है, कि दिक्कत है इसके दिमाग में, he thinks that this is a problem, he thinks कि ये एक दिक्कत है in the first place, वो ये सोचेगा इसके बारे में, वो कि भाई, और वो उसकी अलग दिक्कतें होंगी उसकी जिंदगी में, मे बी देयर विल बी बिगर प्रॉब्लम्स, एग्जाम से बढ़कर प्रॉब्लम्स होगी उसकी जिंदगी में probably, when you are 40 you have great responsibilities, right? पर जो भी है भाई, मतलब then exams look like nothing, वो भी मजे, तो I just don't know at this point, क्या है भाई, why, क्यों क्यों इतना complicated bro, this shouldn't be this complicated bro. Again I'll say it, shouldn't be this complicated.
If it is a fucking parasite. Because I can't let go of it. क्या करूँ मैं? क्या करूँ इस चीज़ का? I can't let go of it. What else can I fucking do? एक 4 चीज़ें निकाली हैं मैंने इसमें से। अब मैं क्या करूँ उनको भाई? Maybe we enact all 4 of them. Maybe we do nothing. Maybe कल जाके we'll do the same thing that we did today. You know? Hmm, maybe. It's like, wow. कभी भी सोच के लगता है कि भाई why am I like making such a big deal out of this? कभी भी देख के लगता है. That is one of my points as well. Maybe I'll try maybe not giving a shit. Maybe not giving it as much of shit that I should be giving it. लेकिन वो भी है, the environment it कहीं ना कहीं से निकाल ही देता है पकलू. भाई anyway, maybe it's time to stop this shit. Anyway, anyway. Um, um, maybe. What? It's like 10 years down the line. जो मान लो 28 year old 500 है और क्या बोलता वो क्या बोलता looking back on this he'll be like कुछ ना कुछ कर रहा होगा ओके कुछ ना कुछ हो रखा होगा उसके साथ he'll have more 10 years more experience than me और वो देख के and he'll be like bro क्या है ये क्यों है ये भाई it's like you have you'll have greater problems than this इससे बहुत घटिया problems आएंगी okay and this is nothing maybe maybe not इससे घटिया problems I don't wanna know इससे ज़्यादा नहीं जानना मेरे को पप and he'll be like कि इस टाइम पे you should be like happy should be happier than you are should be more grateful than you are you know 10 साल ज़्यादा जी के you realize कि मतलब it's like retrospection में retrospective में in a retrospect काफ़ी चीज़ें देखती हैं तो like I think inherent to everyone's being है to be at least sane है whenever they look back it's like they're like life is short life you should be grateful and you shouldn't you should not stress shit like that मुझे retrospect में ये चीज़ें क्यों नहीं पता हैं like you know कि like सेम चीज़ें हैं like जो भी बोलते हैं एडवाइस से 40 year olds to 18 years old सेम एडवाइस को देते हैं भाई एटलीस्ट काफ़ी जनरली different people give different advices but जो भी है यार जो भी है anyway let's end this piece of shit